Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the meaning of behavioral approach. Behavioral approach refers to the scientific study of human being in diverse administrative setting. Right? The subject matter क्या था of this approach is human behavior and it derives all conclusion therefrom. It tries to understand why officials and public employees act as they do. Right? Then we studied. It concludes scientific study of individual and group behavior in different cultural context. To this end, the organization have been viewed as a social system where interpersonal relations among the employees and their informal communication are given due weight. It is believed that understanding of interdynamic of administration has a direct bearing with the behavioral understanding of its employee. Then we studied about the development of behavioral approach. The genesis of behavioralism in public administration can be traced to the Ilton Mayer's have-thrown experiment conducted during 1928-32. See, the genesis of behavioralism in public administration क्या है? It can be traced to the Elthon Mayer's have-thrown experiment. This experiment succeeded in highlighting the importance of human dynamic in administration by challenging the mechanist character of the social scholar work. Then the Havthorne studied not only confirmed the existence of informal organization within formal structure but also brought to the light the importance of human relations in influencing the organizational performance. So, where in his famous work entitled Dynamic Administration, she introduced concepts like law of situation, constructive conflict, democratic leadership, power, authority, and control, etc., which lead to inspire scholars from Harvard Business School under the leadership of Elton Mayo to conduct a series of experiments popularly known as Havthorne's experiment. The finding of this experiment resulted in providing a serious jolt to the classical and scientific management thinking. The human relation movement was further strengthened by Chester Bernard with the publication of his landmark work entitled The Functions of the Executive in the late 1930s. Essentially, he belongs to the human relations school and is prominent among those who realized the importance of human element. However, within this school, he may be said to be the initiator of the behavioral approach. He begins his analysis with the premises that people enter the cooperation with each other in small and large group to release the goal that otherwise could not be possible as individual. देन ऑर्गेनाइजेशन क्या है न एक कुछ भी नहीं बट एक सिस्टम है ऑफ कॉन्शियस कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन. His definition of organization led him to his discourse on communication and authority. He was of the view that the executive could transmit the purpose of organization and understand the needs of the employees only by keeping communication channel open. See, Simon was the next contributor to this approach in the field of public administration. He was very much influenced by the pioneer works of M.P. Flood on group dynamic in organization and human relation approach of Elton Mayo. Simon tried to provide a sound basis to this approach. He wrote an article, Proverb of Administration, in which he scattered the classist claim of universalities of the principle of public administration. He called this principle no better than proverb. And then he opened that whole of the orthodox public administration requires serious reconstruction and proposed development of new science of administration that should focus on behavioral issues. The publication of Simon's seminal work Administrative Behavior in 1947 led to provide further
impetus to the behavioral movement in public administration. See, in this book, he advocated behavioral research in administration. While highlighting administrative behavior, Simon observed that it is a part of the behavioral science and the study of public administration should involve the study of individual, collective human behavior in administration situation. These two concepts primarily focused on the limits of human and organizational gathering and processing of information. See, since 1950s, many sociologists and psychologists contributed significantly in the development of behavioralism in public administration. Abraham Maslow, Douglas and George Racine Libert and Christ Artist are some of the foremost behavioral scientists who use this approach in their respective field. Now, now we will be studying the silent features of behavioral approach. The behavioral approach in administrative studies has the following silent features. अभी अपन बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं. अपन ने अलग अलग अप्रोचेस देखे एंड ऑल. नाउ इसके बिहेवियरल अप्रोचेस के कुछ साइलेंट फीचर्स है. फर्स्ट इज द एनालिटिकल अप्रोच. Behavioral approach is not an ideal approach as it does not believe in what should be or what ought to be. Rather, it is analytical approach and believes in what it is. See, behavioral approach क्या है? एक आइडल अप्रोच नहीं बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये बिलीव नहीं करता एक्चुअल में क्या रहना चाहिए और एक्चुअल में क्या है. इट इज़ अ एनालिटिकल अप्रोच एंड बिलीव्स इन व्हाट इट इज़. अब ये जो बिहेवियरल अप्रोच है उसको लोग क्या बोल रहे हैं? ये एक एनालिटिकल अप्रोच है एंड इट बिलीव्स इन व्हाट इट इज़. ये क्या है इसमें बिलीव करो. ये क्या हो सकता है, क्या रहेगा, उसमें नहीं. इट कंडक्ट्स द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स. सी, इट कंडक्ट्स द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर in different administrative settings. In contraventions to the traditional outlook towards administrative problems and situations, this approach emerged as a new way of looking at these problems or situation. See, अभी क्या है? It conducts the analysis of human behavior. Right? अभी वो ह्यूमन बिहेवियर के एनालिसिस वगैरह करते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में. लाइक अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव में अलग अलग बिहेवियर के लोग रहते हैं तो उनका वो सारा एनालाइज करते हैं और इसमें वो देखते हैं कि बाबा ट्रेडिशनल से ये कैसे बेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे आते हैं और आजकल नए नए नाउ वी आर मूविंग इन द न्यू सेंचुरी. लाइक अभी के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे है, कैसे लोग उन प्रॉब्लम को नई तरीके से देख के नए नए सिचुएशन नए नए प्रॉब्लम्स के साथ टैकल कर रहे हैं. इट इज़ इसेंशियली कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. से ये क्या है? इट इज़ इसेंशियली कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. दिस अप्रोच डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज शुड बिहेव. rather it merely explains how they actually behave. See, this approach क्या है? This approach does not concentrate on, ये किस पे concentrate नहीं करते हैं? How the ये administrative functionary कैसे काम करना चाहिए. rather ये किस पे बिलीव करते हैं? How they actually behave. rather वो किस पे ध्यान देते हैं कि वो कैसे behave करना चाहिए. Thus it analyzes the effectiveness of behavior of administrative functionaries operating in different administrative system in a comparative perspective. See, दस क्या है? वो क्या करता है? वो एनालाइज करता है इफेक्टिवली ऑफ द, यहाँ पे क्या एनालाइज हो रहा है? इफेक्टिवनेस ऑफ द बिहेवियर. इट एनालाइजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिहेवियर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उस एरिया में अलग अलग तरीके में कैसे काम करता है, कैसे आज का कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है. Now moving towards the second point, interdisciplinary in character. This approach believes in the interrelatedness of all social science and aims to make public administration interdisciplinary. See, ये approach किस पे बिलीव करता है? This approach believes in the
इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ऑल सोशल साइंस और इसका एम क्या है? टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटर डिसिप्लिनरी. In the discipline of public administration, it draws heavily from different social science, especially from sociology and psychology, for analyzing administrative behavior in different contexts. See, in this discipline, अभी ये जो discipline of public administration में it क्या है? It draws heavily from different social science. ये कहाँ से आता है? It came from different social science, especially from the sociology and psychology, for analyzing the administrative behavior in different contexts. The phenomena has been explained by Simon more precisely. अब ये phenomena जो भी है ये साइमन ने कैसे एक्सप्लेन किया है? साइमन has explained this phenomena more precisely. उसने पूरे ध्यान से अच्छे से एक्सप्लेन किया है. According to him, this approach makes considerable use of preposition drawn from other social science and to empirical data on administrative behavior to test such preposition in organizational context. See, according to him क्या है? ये अप्रोच क्या है? This approach makes considerable use of preposition. ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अप्रोच प्रॉपर यूज ऑफ प्रिपोजिशन कर रहा है सो दैट वो सोशल साइंस पे भी ध्यान दे सके और जो डेटा मिल रहा है अपने को एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर का एंड ऑल, उसके ऊपर भी वो पूरा ध्यान दे सके. देन मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, empirical approach. This approach is centered on the human behavior which cannot be tested in closed rooms. See, this approach क्या है? This approach is centered on the human behavior, right? जो अपन टेस्ट नहीं कर सकते. एक क्लोज रूम में बैठ के अपन ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं टेस्ट कर सकते. So it is believed in the field testing or conducting empirical analysis of human behavior. वो क्या करते हैं? फील्ड टेस्टिंग करते हैं. लाइक सिर्फ एक ऑफिस दे दिया आपको छोटा सा, इसमें काम कर, उसके ऊपर से मैं तेरा बिहेवियर टेस्ट करूँगी, उसके ऊपर से मैं आपका सब टेस्ट करूँगी. विल इट बी फेयर इनफ? नो, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? तो क्या है? दे आर डूइंग फील्ड टेस्टिंग और या फिर कंडक्टिंग एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. To this end, it utilizes various direct methods of data collection like field observation, controlled field experiment and laboratory study. See, to this end क्या है? It utilizes various direct method. यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट मेथड से डेटा कलेक्ट हो रहा है लाइक थ्रू फील्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड लैबोरेटरी स्टडी. For instance, if we wish to study the behavior of Haryana police office, we cannot conduct this study in laboratory. Rather, we shall have to go in the field to gather the relevant information about their behavior. See, वो लोग एक एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? अगर आपको हरियाणा पुलिस ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए आपको लेबोरेटरी की स्टडी, लैब में जाने की ज़रूरत है क्या? या फिर लैब टेस्ट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं. रैदर क्या है? आप कोई फील्ड पे लेके जाओ और वहाँ से उनसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराओ, उनको कुछ टास्क दो, तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा उनके बिहेवियर के बारे में. देन कॉम्प्लिकेटेड subject matter. The subject matter of this approach is very complex, mainly because of two reasons. See, the subject matter of this approach क्या है? It is very complex because of two reasons. First, it deals with the study of human behavior, which in itself is very much complex and complicated and difficult to understand. See, first क्या है? It deals with the study. First problem क्या है? It deals with the study of human behavior, जो उसमें ये complex है और complicated and difficult to understand है. A precise understanding of human behavior of public functionaries operating in various administrative contexts is hard to claim. See, अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है ह्यूमन बिहेवियर या फिर पब्लिक फंक्शनरी ऑपरेटिंग इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट, तो क्या है? ये सब कुछ बहुत हार्ड जाएगा क्लेम करने को. इट इज़ मेनली बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट स्टैटिक एंड थस लेस प्रेडिक्टेबल. सी, क्यों ऐसे बोल रहे हैं?
क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, स्टैटिक नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट बिहेव नहीं करता, वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, चेंज होता रहता है, और इसकी वजह से क्या है अपन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. इट चेंजेस विद द चेंज इन टाइम, प्लेस एंड सेटिंग. ह्यूमन बिहेवियर क्या है, चेंज होता रहता है टाइम, प्लेस, सेटिंग के हिसाब से. सेकेंडली, दिस अप्रोच मेक्स अ हेवी रिलायंस ऑन द कंसेप्ट, टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स borrowed not only from the social science but also from physical science. This dimension further add to the complexity of its subject matter. Secondly क्या है, ये अप्रोच क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम कंडक्ट, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स पे बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता, एक सोशल साइंस है, और बट इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम फिजिकल साइंस. दिस डायमेंशंस क्या है, ये सारे डायमेंशंस आगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं यहाँ पे. Moving towards the next point, that is scientific in character. Another important characteristic of this approach is that it is scientific in nature, as it lays emphasis on the empiricism and drawing realistic judgment. Say another important characteristics क्या है इसका of this approach is that it is scientific nature. ये क्या है, it is scientific nature and it lays more emphasis on empiricism and drawing realistic judgment. It aims at replacing value judgment by empirical tested facts. See, उसका aim क्या है, it aims at replacing value judgment by empirical tested fact. In its scientific inquiry, it studies human behavior in various administrative settings. See, in its scientific inquiry क्या है, it studies human behavior in various administrative settings. To this end, it utilizes scientific methodology, standardized techniques and verifiable procedure. See, to this end क्या है, it utilizes scientific methodology. ये क्या करता है, it uses a scientific methodology, standardized techniques and verifiable procedure. Besides, it utilizes mathematical model that imparts a scientific status to this approach. अभी इसको क्या डालते हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल्स डाल रहे हैं यहाँ पे, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर साइंटिफिक स्टेटस, एक साइंटिफिक स्टेटस मिले आपको ये अप्रोच यूज करके. प्रोफेसर अरोरा स्टेट्स दैट दिस अप्रोच टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज कंसर्न्ड विद क्वांटिफिकेशन. से प्रोफेसर अरोरा क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज ही स्टेट्स कि बाबा ये जो अप्रोच है टू ग्रेट एक्सटेंट क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद क्वांटिफिकेशन, mathematization and formal theory construction in the discipline of public administration. प्रोफेसर अरोरा क्या बोल रहे हैं, ये जो अप्रोच है ये किससे कंसर्न्ड है, विद आपका क्वालिफिकेशन से, आपके मैथमेटिक्स एंड अदर फॉर्मुलर थेरी. 4.6 value free approach. Another important feature of this approach is that it is value neutral in character. See, 4.6 वैल्यू फ्री अप्रोच, ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस अप्रोच है, दैट इज वैल्यू न्यूट्रल इन कैरेक्टर. इन एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली, बिहेवियरलिस्ट कीप देयर ओन वैल्यूज अवे फ्रॉम देयर स्टडीज. जब भी अपन ये बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो, राइट, तो साइंटिफिकली अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो बिहेवियरलिस्ट क्या देखते हैं, उनके वैल्यूज वगैरह क्या है वो साइड में रखते हैं. दे बिलीव दैट सिंस वैल्यू कैन नॉट बी साइंटिफिकली टेस्टेड और प्रूव्ड, so they do not start with any perception or value as it utilize the findings. से वो क्या बिलीव करते हैं, सी वैल्यू क्या है आप साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही प्रूव कर सकते हो, तो क्या है वैल्यू के ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच. The contribution of behavioral approach in administrative studies can be discussed as under. Guides scientific investigation. कितने 4 पॉइंट्स है, चलो. Guides scientific investigation. This approach has provided significant in guiding and motivating scientific investigation in the field of public administration. So ये जो approach है, what it has done, it has given certain guidelines and motivation for the scientific investigation in the field of public administration. As an outcome, क्या है, scholars in public administration have attempted to utilize this approach as a main tool for conducting research on administrative behavior
of the public functionaries in a scientific way. See, as an outcome क्या है, scholars in public administration what they have done, they have made attempt to utilize this approach. उन्होंने पूरी तरह से ट्राई किया कि वो यूटिलाइज अच्छे से करें इस अप्रोच का, ताकि उनका मेन टूल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, so that the main tool for conducting research on administrative behavior of public functionaries in a scientific way, so that they can conduct, so the main tool for conducting research on administrative behavior of public functionaries in a scientific way. For instance, various Indian scholars like Pai Panandikar, Kuldeep Mathur, then Ramashray Rai Roy, Shanti Kothari and C.P. Bhambari have taken initiative in this regard. See, अभी इसके लिए अपने बहुत से इंडियन स्कॉलर्स भी आ गया है, कुछ के नाम उन्होंने दिए हैं, पाई पनंडिकर, कुलदीप माथुर, देन रॉय, शांति कोठारी, इन सब ने बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिया है. सिस्टमैटिक थ्योरी कंस्ट्रक्शन. दिस अप्रोच lays emphasis on conducting study about the behavior of the administrative system embodied in different cultural setting. See, ये अप्रोच क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस अप्रोच क्या है, it is giving emphasis on conducting studies, अभी conduct about the behavior of administrative system के ऊपर स्टडी अपने को करना है बिहेवियर का वगैरह, और ये अलग अलग कल्चरल सेटिंग में है. लाइक महाराष्ट्रन कल्चर में लोग ऐसे बिहेव करके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे काम कर रहे हैं, तो वही पंजाब में क्या है, पंजाब का कल्चर अलग है, तो वहाँ पे कल्चरल के हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर दे आर कंडक्टिंग स्टडी. It is mainly because the study of the behavior of two or more administrative systems rooted in the same cultural setting will not much deviate from one another. See, it is mainly because क्यों है ये जो study of the behavior है, दो और more administrative system का है, it is rooted in the cultural setting and will not deviate from one another. Therefore, if we conduct comparative studies of two or more administrative systems with same culture setting, the comparison would be of little significance to the literature of the discipline. See, अगर अपन ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दो या ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव का, हाँ, सेम कल्चर में दो या टू और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव का अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यू विल गेट अ सिग्निफिकेंस टू द लिटरेचर ऑफ द डिसिप्लिन. आपको लाइक सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी मिल ही जाएगी. In this way, this approach plays a significant role. In this way, this approach plays a significant role in promoting intercultural or cross-cultural study. इसलिए ये अप्रोच ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अपने को इंटरकल्चरल या फिर क्रॉस कल्चर स्टडी पता चलती है. However, in the field of comparative public administration, very few such studies have been conducted, more specialized by the Western scholars such as Robert Frastus and Michael Croce. इस फील्ड में ज़्यादा स्टडी नहीं की है, सिस्टमैटिक थ्योरी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं की है, सिर्फ कुछ फॉरेन स्कॉलर्स हैं उन्होंने ही इस पर ज़्यादा स्टडी की है. देन एक्सटेंशन ऑफ द फ्रंटियर ऑफ द डिसिप्लिन. दिस अप्रोच succeeded in adding a new dimension to the literature of public administration. ये अप्रोच क्या है, this approach succeeded in adding new dimension to the literature of public administration. It promoted the interest of the scholars of public administration to conduct more and more research on this aspect in different administrative setting and cultural context. See, ये क्या है, it promoted the interest of the scholar of public administration so that they conduct more and more research on this aspect in different administrative setting and cultural context. In this regard, it heavily relies on the subject matter, tools and concept literally borrowed from other disciplines like sociology, psychology, mathematics, political science, etc. See, it promotes the interest of scholars of public administration so that वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स पे, कल्चरल्स पे. In this regard, it heavily relies on the subject matter, tools and concept
लिबरली बोरोड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी, ये हो गया था ना. कॉन्सिक्वेंटली द इंटरैक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ अदर डिसिप्लिन एनहांस सिग्निफिकेंटली. इससे क्या होगा, इंटरैक्शन बढ़ेगा और अपने को अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी. दिस लेड टू अ जनरेशन ऑफ न्यू कंसेप्ट एंड नॉलेज विच अपार्ट फ्रॉम broadening the vision of the students and research to public administration also contributed in the enrichment of its subject matter. See, this leads to a generation of new concept and knowledge, जिससे क्या होता है अपन और ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिलता है, और ज़्यादा रिसर्च करने को मिलता है, और इससे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ती है. सच इंक्लिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स अदर डिसिप्लिन further proved more significant for the sub-discipline of comparative public administration towards making it more interesting. से इसलिए क्या होता है, अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मोर इंटरेस्टिंग बन जाता है. Development of new orientation. This approach further proved significant in providing new orientation to the administrative thought. It emerged as a challenge against traditional way of looking at administrative problem. See, ये जो अप्रोच है इसको एक सिग्निफिकेंट मिला, एक नया ओरिएंटेशन, एक नई राह मिली एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर देखने की ओर, राइट. और ये ट्रेडिशनल वे को चैलेंज किया एंड इट केम अप विथ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. दिस अप्रोच वॉज अ न्यू वे ऑफ एनालाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन. ये जो अप्रोच था ये एक नया तरीका था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन. It resulted into change in focuses of attention of the scholars of public administration towards the role of individual, group dynamic and leadership in organization etc. अब क्या हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने फोकस, बहुत से स्कॉलर्स ने फोकस किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है, लीडरशिप, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी उन्होंने. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ सोशल सिस्टम. Change in focus lead to understanding the basic urge, needs and demands of administrative functionaries in different organizational settings. See, now organization को क्या बोल रहे हैं अपन, एक सोशल सिस्टम बोल रहे हैं. यहाँ पे फोकस किस पे दिया जा रहा है, कुछ अर्जेंट चीज़ पे अपने को समझनी है, नीड क्या है, डिमांड क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव की, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग कैसा चेंज हो सकता है एंड ऑल. Currently, the findings and knowledge of behavioral studies are increasingly being used by organizational development practitioner in organizational redesigning and solving the organization performance. See, करंटली क्या है, अभी ये लोग बिहेवियरल स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, रीडिज़ाइन कर सके, और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम में वो सॉल्व कर सके, एंड ऑर्गेनाइजेशनल में अपना परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छे से बढ़ा सके. विल एंड अप द लेक्चर हियर. In next lecture we'll end up the third topic. Thank you.